अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे लालाजी स्टोरी, लालाजी पढ़ रहे थे हम। तो उसका अगला पार्ट है। देयर वॉज नो क्वेश्चन दैट द मैन इन माई पोनका कुलीज हाउस वॉज सफरिंग फ्रॉम अ बैड अटैक ऑफ कॉलरा, एंड इफ ही वॉज टू सर्वाइव, his faith and my crude treatment alone would pull him through. For the only medical aid within miles was a brute of a doctor, as callous as he was inefficient. I could not spare much time to nurse the thin man, for I already had 3 cholera patients on my hands. From my servants I could expect no help, for they were of a different caste to the sufferer, and further, there was no justification for exposing them to the risk of infection. However, this did not matter, provided I could instill sufficient confidence into the man that my treatment was going to make him well. To this end, I made it very clear to him that I had not brought him into my compound to die and to give me the trouble of serenading him, but to make him well, and that it was only with his cooperation that this could be effected. The first night I feared that in spite of our joint efforts he would die, but towards morning he rallied, and from then on his condition continued to improve, and all that remained to be done was to build up his strength, which cholera drains out of the human body more quickly than any other diseases. At the end of a week, he was able to give me his story. He was a Lala, a merchant, and at one time possessed a flourishing grain business. Then he made the mistake of taking as partner a man about whom he knew nothing. For a few years the business prospered, and all went well, but one day when he returned from a long journey, he found the shop empty and his partner gone. The little money in his possession was only sufficient to meet his personal debts, and bereft of credit, he had to seek employment. This he found with the merchant with whom he had traded, and for 10 years he had worked on 7 rupees a month, which was only sufficient to support himself and his son, his wife having died shortly after his partner robbed him. He was on his way from Muzaffarpur to Gaya on his master's business when he was taken ill in the train. As he got worse on board the ferry steamer, he had crawled ashore to die on the banks of sacred Ganga. Lalajee, I never knew him by any other name, stayed with me for about a month, and then one day he requested permission to continue his journey to Gaya. The request was made as we were walking through the sheds, for Lalajee was strong enough now to accompany me for a short distance each morning when I set out for work, and when I asked him what he would do if, on arrival at Gaya, he found his master had filled his place, and said he would try to find other employment. Why not try to get someone to help you to be a merchant again? I asked it, and he replied, the thought of being a merchant once again and able to educate my son is with me night and day, Sahib, but there is no one in all the world who would trust me, a servant on 7 rupees a month and without any security to offer. With the 500 rupees I should need to give me a new start. The train for Gaya left 8 p.m. and when the evening I returned to the bungalow a little before that hour, I found Lalajee
with freshly washed clothes and a bundle in his hand, a little bigger than one he had arrived with, waiting in the veranda to say goodbye to me. तो प्यारे बच्चों, जिम कॉर्बेट ने ये कहानी लिखी है लाला जी। इसमें ये क्या करता है, ये कहता है कि लाला जी को, यानी जो वो बंदा था जो कुली के कमरे में था, उसको कालरा हुआ था और वो जिंदगी की जंग में पड़ा हुआ था। उसका यकीन, और जिम कॉर्बेट कह रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट जो था ये ही एक इलाज था जो उसको इस बीमारी से छुटकारा दे सकता था। और जहाँ तक मेडिकल एड की बात है तो वहाँ एक डॉक्टर था और वो कुछ एफिशिएंट नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि मैं एक आदमी के लिए इतना टाइम मेरे स्पेयर नहीं कर सकता था कि मैं उसकी नर्सिंग कर सकूं, मैं उसकी देखभाल कर सकूं। फ्रॉम माई सर्वेंट आई कुड एक्सपेक्ट नो हेल्प। और यही जिम कॉर्बेट कहता है कि नौकरों की तरफ से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मदद की, क्योंकि वो मुख्तलिफ नस्लों के थे, मुख्तलिफ कास्ट के थे। और दूसरी बात यह है कि मैं भी ये रिस्क लेना नहीं चाहता था कि इस कॉलरा वाले आदमी के पास उन्हें ले आऊं और उनको भी इन्फेक्शन की रिस्क में डाल दूं। हालांकि ये कोई मामला नहीं था। मैंने उस आदमी को पूरा भरोसा दिलाया था और मेरा इलाज चल रहा था और वो ठीक भी हो रहा था। और मैंने एक बात उसे वाज़ेह कर दी थी कि मैंने उसे अपने कंपाउंड में, अपने कमरे में मरने के लिए नहीं लाया है, और फिर वो उसको दफनाने वगैरह का या जलाने वाला वगैरह के काम की परेशानी में डालने के लिए नहीं लाया है, बल्कि मैंने उसको लाया है कि मैं उसको ठीक कर दूं। That is was only with his cooperation that he could be affected. और ठीक होना उसके कॉपरेशन से ही, यानी वो बंदा ठीक हो सकता था। पहली रात मुझे डर था कि ये बंदा मर जाएगा, कोशिश करने के बावजूद भी। लेकिन जब सुबह को मैं आया तो वो बंदा जो था उसकी हालत थोड़ा बेहतर थी और मैंने पूरी कोशिश की कि उसके अंदर जान आ जाए। और जो जान कालरा ने उसके जिस्म से निकाली हुई थी, यानी कालरा से इंसान बिल्कुल लागर हो जाता है, खतरनाक बुखार होता है, और ये डिजीज जो है इंसान को बिल्कुल कमजोर कर देती है। एट द एंड ऑफ वीक ही वॉज एबल टू गिव मी हिज हिस्ट्री। और जब उसे मेरे कंपाउंड में, मेरे कुली के रूम में एक हफ्ता हो गया तो एक हफ्ते के बाद उसने मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी। वो एक लाला था, यानी वो मर्चेंट था, और उसके पास काफ़ी अच्छा बिजनेस था, अनाज का बिजनेस करता था, वो काफ़ी फ्लोरिशिंग बिजनेस था। फिर उसने एक मिस्टेक की, एक गलती की कि उसने साथ में एक पार्टनर रख लिया जिसको वो जानता भी नहीं था। फिर क्या हुआ, कुछ साल उसका बिजनेस ठीक ठाक चलता रहा, और एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब वो सफ़र से वापस आया तो उसने देखा कि उसका गोदाम जो था, उसकी दुकान जो थी वो बिल्कुल खाली थी, और उसका पार्टनर जो था वो कहीं चला गया था। और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, यानी लाला जी के पास जो पैसे थे थोड़े बहुत, वो उसे अपना कर्ज उतारने में और मुश्किल से उधार वगैरह देने के लिए ही काफ़ी थे। और ज़िंदगी चलाने के लिए उसे अब नौकरी की ज़रूरत थी। और फिर उसे नौकरी दिस ही फाउंड विद द मर्चेंट विद होम ही हैड ट्रेडेड, और नौकरी उसे मिली उसी सौदागर के साथ जिसके साथ वो सौदाबाजी करता था, तिजारत किया करता था। और 10 साल तक अब वो उसी सौदागर के साथ, मर्चेंट के साथ 7 रुपये मुहाना पे काम कर रहा है, यानी उसकी महीने की तनख्वाह जो थी वो 7 रुपये थी। और ये अमाउंट जो था, ये 7 रुपये जो थे, ये सिर्फ उसका खर्चा और उसके बच्चे के खाने पीने का खर्चे के लिए काफ़ी थे।
his wife جو اس کی بیوی تھی died. وہ مر گئی تھی جب اس کے پارٹنر نے اس کو لوٹ لیا. اور یہ لالا جی جو تھے یہ آج مظفر پور سے گیا کی طرف جا رہے تھے on his master's business اپنے مالک کے کام سے. when he was taken ill in the train اور جب وہ ٹرین میں ہی ریل گاڑی میں ہی بیمار ہو گئے. as he got worse on board the ferry steamer he had crawled shore to die on the banks of sacred Ganga. جب وہ زیادہ بیمار ہو گیا اپنے سفر کے دوران تو اب وہ دریائے گنگا کے کنارے پہنچا کسی طرح سے رینگتے ہوئے مرنے کے لیے. لالا جی I never knew him by any other name. یعنی یہ کہہ رہا ہے جم کاربیٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا دوسرا کوئی نام معلوم نہیں ہے, میں اسے لالا جی ہی کہتا تھا. وہ میرے ساتھ تقریباً 1 مہینہ رہا اور ایک دن اس نے مجھے گزارش کی کہ آپ مجھے اجازت دو کہ میں اپنا سفر گیا کی طرف کنٹینیو کروں. اور یہ ریکویسٹ اس نے اس وقت کی تھی جب ہم چل رہے تھے شیڈز کے بیچوں بیچ. لالا جی اب اتنا مضبوط ہو چکا تھا, اتنے مطلب اس میں جان آ چکی تھی کہ وہ تھوڑا سا فاصلہ میرے ساتھ طے کرتا تھا ہر صبح جب میں کام پہ نکلتا تھا. اور جب میں اسے پوچھتا تھا کہ تم کیا کرو گے گیا پہنچ کے, اگر تمہارے ماسٹر نے تمہارے مالک نے تمہاری جگہ کوئی دوسرا بندہ رکھ لیا ہوگا تو وہ کہتا کہ میں کوئی دوسرا جاب ڈھونڈوں گا. میں اسے کہتا کہ تم دوبارہ سوداگری کیوں نہیں کرتے, تم مرچنٹ کیوں نہیں بنتے. اس کے جواب میں وہ کہتا یہ سوچ تو میرے دماغ میں ہے کہ میں پھر سے سوداگر بنوں اور اپنے بچے کو اس قابل بناؤں کہ وہ پڑھ سکے. یہ تو دن رات میری سوچ ہے صاحب, لیکن کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اب مجھ پہ بھروسہ کرے. جو نوکر 7 روپے ماہانہ کماتا ہو, جس کے پاس کوئی سیکیورٹی وغیرہ نہ ہو, کون اسے with the 500 rupees I should need to give me a new start. اور میرے پاس مجھے کون 500 روپے دے گا کہ میں نئی شروعات کروں. اور ٹرین جو تھی وہ گیا کی طرف 8 بجے نکلنی تھی شام کو, اور میں واپس بنگلے کی طرف آیا. یعنی جم کاربیٹ کہہ رہا ہے کہ میں بنگلے کی طرف آیا اس وقت سے لگ بھگ پہلے ہی, اور میں نے دیکھا کہ لالا جی صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور اپنی گتھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے لٹل بگر دین دا ون ہی ہیڈ ارائیوڈ ود, یعنی جو گتھڑی تھوڑا بڑی تھی, جو گتھڑی وہ لے کے آیا تھا اس سے تھوڑا بڑی تھی, ویٹنگ ان دا ورانڈا ٹو سے گڈ بائی ٹو می. وہ میرا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے الوداع کہے.